Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Rimani from BS Zoology and I am here to discuss the internal structure of selaginella. First of all, we discuss the anatomy of rhizophore. What is rhizophore? In some species, leafless and colorless branches arise from the posterior stem near point of branching. These grow downwards and have group of adventitious roots. This is called rhizophore. The internal structure of rhizophore is almost similar to that of roots. That's mean रूट्स का भी इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो सर्कुलर इन आउटलाइन शो करता है. इस तरह राइजोफोर भी सर्कुलर इन आउटलाइन होता है. इट शोज फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स: एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एंड स्टील. First of all, we discuss epidermis. Epidermis is a single layered and outer wall of epidermal cells that is covered with thickened wall that are cuticles. Root hairs or stomata are absent in epidermis. Then we discuss cortex. Beneath the epidermis layer, a white zone is present that is called cortex, and it is further differentiated into outer and inner zones that are sclerenchymus outer zone and inner parenchymus zone. Further, we discuss the endodermis, and the innermost layer of cortex is called endodermis, and it is well defined single layer structure. मतलब इसमें सिर्फ सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है. देन वी डिस्कस पेरिसाइकल. इनसाइड द एपिडर्मिस, इनसाइड द एंडोडर्मिस इज अ प्रेजेंट सिंगल लेयर पेरेन्काइमस पेरिसाइकल. पेरिसाइकल होता क्या है? पेरिसाइकल इज थिक walled cells that surrounds the vascular tissues that are xylem and phloem. Next we discuss steel. Steel is typically protosteel. Now what is protosteel? Protosteel is a type of steel in which xylem is surrounded by phloem. Xylem shows distinct positions that are protoxylem and metaxylem elements. Protoxylem are those in which the xylem are present at the tips, and metaxylems are those in which the roots xylem are present at the center. आप पिक्चर में भी देख सकते हैं xylem बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, इसलिए इसे मेटाजाइलम कहते हैं. सबसे आउटर लेयर क्यूटिकल है, उससे नेक्स्ट एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस है, फिर कॉर्टेक्स का जोन आ जाता है. कॉर्टेक्स से इनर एंडोडर्मिस है, फिर जो वस्कुलर टिश्यूज़ में जाइलम और फ्लोएम को सराउंड कर रही है उसे पेरिसाइकल कहते हैं. Now we discuss the anatomy of leaf. The internal structure of leaf shows epidermis, mesophyll and a single median vascular bundle which has been discussed below. Endodermis. It is the outermost layer and only one cell in thickness. The most of the species, the stomata are present only on the lower epidermis near the midrib. It means mostly species में स्टोमेटा जो होते हैं वो लोअर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं. अपर एपिडर्मिस पे इतने रेयर केसेस ही होते होंगे, लेकिन जो लोअर एपिडर्मिस होते हैं इसके बहुत सारे इनर और आउटर दोनों साइड्स पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. और एपिडर्मिस के सेल्स क्लोरोप्लास्ट भी प्रोवाइड करते हैं विच हेल्प इन दी photosynthesis. Mesophyll, it occupies the wide zone between the lower and upper epidermis, and mesophyll is made up of parenchymus cells which have intracellular spaces. It is also known as air spaces which help in the transport of materials, exchange of gases, and transport of nutrients. Each mesophyll has 1, 2 or 8 chloroplasts. Each chloroplast has several paranoid-like bodies similar to water bryophyte. It means क्लोरोप्लास्ट में जैसे ब्रायोफाइटा में पैरानाइड्स लाइक बॉडीज होते हैं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे पैरानाइड्स लाइक बॉडीज ही कहा गया है. जो हेल्प किस में करता है? पैरानाइड्स एसोसिएटेड विद दी कार्बन कंसनट्रेटिंग मैकेनिज्म. ये पैरानाइड्स जो होते हैं वो कार्बन कंसनट्रेटेड मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं. देन वी डिस्कस वस्कुलर बंडल. Only one muscular bundle is present in center. It is concentric and ectophilic. Now we discuss vascular bundle. Only one vascular bundle is present in the center. It is concentric and ectophilic. Ectophilic means के flowing only covered externally by xylem, and xylem is made up of few tracheids and surrounded by phloem elements. फ्लोएम एलिमेंट्स में फ्यू सीड्स एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एंड सिंगल लेयर्ड बंडल शीट इनसेकल्स द फ्लोएम ऑन ऑल साइड्स. स्ट्रक्चर से शो हो रहा है जैसे अब मेसोफिल अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के मिड में प्रेजेंट हैं.
मस्कुलर बंडल है, लोअर एपिडर्मिस एयर स्पेसिस शो की गई हैं और क्लोरोप्लास्ट अपर एपिडर्मिस के ऊपर शो किए गए हैं। Now we discuss the root anatomy. The root is circular in outline and shows the following internal structure. Epidermis, it is the outermost covering layer and is only one cell in thickness. The cells are large and the unicellular roots arise from them. Rhizophora roots का structure almost similar है, just root hairs का difference है. Then cortex, just below the epidermis is present a wide zone of cortex. The cortex may be either made up of thin-walled parenchymal cells or there may be sclerenchymal outer cortex. The inner zone made up of parenchymal cells is called inner cortex. The zone which is made up of sclerenchymal cells, it is called outer cortex. In mature roots of S. densa, S. densa is the name of species. The entire cortex may be consist of thick-walled sclerotic cells. Sclerotic cells अब क्या होते हैं? These are hard and firm cells which may be sometimes bony and cartilaginous. Hair species also have been reported in the inner cortex. Then we discuss the androgens. It is usually not well defined, but in some species, as for example, as densa, it is distinct structure and only one cell in thickness. Then endodermis के बाद pericycle. Endodermis is followed by 1 to 3 layered pericycle. It is made up of parenchymal cells. Pericycle वही है जो xylem और vascular tissues को surround करता है, जिसमें xylem और phloem आते हैं. Still, it is a typical protosteel in which the xylem is surrounded by phloem. On all sides, the structure of xylem and phloem elements is similar to that of stem. यहाँ पे इसकी डायग्राम शो हो रही है जैसे सिमिलर सेम रूट राइजोफोर की तरह है, जस्ट यहाँ पे जो डिफरेंस है वहाँ ये रूट हेयर्स का डिफरेंस है. बाकी ऑलमोस्ट सारी डायग्राम सेम है, जैसे रूट हेयर है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस है, देन कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल जिसमें जाइलम और फ्लोएम सराउंड किए गए हैं.